Hello students, welcome to tutoringcluster.com. Now in this video, we are going to talk about a refrigerator. So hope you have understood what are heat engines, and also we have solved some good numericals based on heat engine. So in similar fashion, we are going to learn about a refrigerator along with some important numericals. So if you are new to my YouTube channel, please do like and subscribe my YouTube channel. You can join us on Telegram and also you can find us on Facebook. So what are refrigerator? Okay, so basically refrigerator, these are the devices which removes heat from a body at lower temperature on expense of external work supplied. Okay, see, everybody knows what a refrigerator, right? You might have seen the refrigerator. What is happening inside the refrigerator? So let's say this is your refrigerator. Okay, so this is the compartment you are storing all your stuffs, right? You are storing the vegetables, then you are storing other food stuff, cake, ice cream, everything. Now what is happening basically, you are removing the heat from the refrigerating compartment. You are removing the heat or you are rejecting the heat. That means the temperature inside the compartment, it gets lower down. The temperature, it gets lower down. हमें टेम्परेचर कम करना है, यानी क्या करना है, जो भी हीट कंटेंट है, वेजिटेबल्स का जो हीट कंटेंट है या फिर जो भी फूड स्टफ्स आपने स्टोर किए हैं उसमें से आपको हीट निकालनी है एंड यू हैव टू रिजेक्ट दैट हीट इनटू द सराउंडिंग. Okay, so you are removing the heat, that means you are lowering the temperature of the compartment. Now this is one thing. Second thing, how refrigerator works, you have to supply some, you have to give some input electrical energy. So input is given, right? Then you are removing the heat from the compartment. This is your compartment and you are rejecting the heat to the surrounding. Okay. So how the block diagram of a refrigerator looks. So you are having a refrigerator. Now refrigerator, these are denoted by R. Okay, so it is going to take some input W. What it does, it removes the heat, right? It removes the heat from the compartment. This is your compartment, refrigerating compartment. Okay, it removes the heat. Let's say this is at a temperature T2, so this will be Q2, and it is going to reject this heat to the surrounding. So this is your surrounding. Okay, and surrounding, let's say it is at a temperature T1. Okay, again T1 is more than T2. So basically how heat is flowing, how heat is flowing from lower temperature. Remember, this is what, this is a low temperature. Heat is flowing from low temperature to high temperature. Till now we have seen that heat can easily flow from high temperature to low temperature. But if you are providing some input, then you can transfer the heat energy from lower temperature to higher temperature. Is it clear? Okay, so this is your compartment. From this compartment you are extracting the heat
and you are rejecting the heat to the surrounding. So to transfer the heat from lower temperature to higher temperature, you need some work input. So this is how a refrigerator works. Now, we have defined efficiency for a heat engine, right? Now, for refrigerator, we are going to define a new terminology, that is coefficient of performance. Coefficient of performance. Coefficient of performance. ओके जैसे हमने इफिशियंसी डिफाइन किया था, उसी तरह instead of efficiency we are going to define COP of a refrigerator. So coefficient of performance, it is defined as desired effect upon work input. Okay, now you have to tell me what is the desired effect here. What is the desired effect here? क्या इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेटर में? Q2 इंपॉर्टेंट है. Okay, we have not shown here. This will be your Q1. Okay, it is rejecting Q1 amount of it to the surrounding. Now you have to tell me in a refrigerator which is more important, is Q2 is important or Q1 is important. देखो, हम जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, अगर मैक्सिमम हमें एकदम कूलिंग इफेक्ट चाहिए है, यानी आपको मैक्सिमम हीट वहां से रिमूव करनी पड़ेगी. ओके, सो इफ यू वांट द कंपार्टमेंट टू बी cool more, that means more amount of Q2 is to be removed. So जितना Q2 ज्यादा निकलेगा उतना कंपार्टमेंट क्या रहेगा? कूल रहेगा. So what is the desired effect here? Q2 is more important. Okay, Q1 is not important कि how much amount we are rejecting. हमें क्या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए. वो हमें कहाँ से मिलेगा कूलिंग इफेक्ट? जब हम ज्यादा अमाउंट इस कंपार्टमेंट से रिमूव करेंगे तब you will get more cooling effect. Yes, so Q2 is more important as compared to Q1. So Q2 is your desired effect. And what is the work input? It is W. Again, this W, you can say Q2 यहाँ पे in हो रहा है, Q1 बाहर जा रहा है. So W कितना रहेगा? It will be Q1 minus Q2. Okay, so this is how coefficient of performance for refrigerator is defined. Is it clear? Okay. Now let us see some examples on refrigerator. So this is the block diagram and we have seen how to define coefficient of performance. Now let us read first example. A refrigerating system is used to maintain a cold storage at 4 degrees Celsius. The heat leakage from the surrounding into the cold storage is estimated to be 1800 kilojoule per minute. If COP of the refrigeration system is 1.5, find amount of heat rejected to the surrounding and power required to drive the refrigeration system. Okay. So this example, it is based on what? It is based on refrigeration. That we understood. Okay. So पहले मैंने क्या बोला है आपको एग्जाम्पल किस चीज का दिया है, वेदर इट इज बेस्ड ऑन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उसका ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. लेट अस ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर. जस्ट नाउ वी हैव सीन. ओके, अब ब्लॉक डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करिए, समझ लीजिए. ओके, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. ओके, इफ यू आर राइटिंग रेफ्रिजरेटर, और एक बार समझते हैं. आपने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिख दिया है. सो रेफ्रिजरेटर कुछ वर्क इनपुट लेगा. ओके, इट इज गोइंग टू रिमूव द हीट
and it is going to reject the heat. This will be at T1, this will be at T2. बस खत्म. This is our refrigerator block diagram. Okay, sketch. Right. Now let us read. Refrigerator system is used to maintain a cold storage at 4 डिग्री सेल्सियस. मैंने क्या बताया, कोल्ड स्टोरेज क्या रहेगा, ये रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस. तो T2 क्या रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस. ओके. Then heat leakage from the surrounding into the cold storage is estimated to be 1800 kilojoule per minute. Heat leakage from surrounding into the cold storage, into the cold storage. So Q2 is given, how much it is, 1800 kilojoule per minute. Okay. Now COP of refrigerating system is given. COP, how much it is, 1.5. Find amount of heat rejected to the surrounding. So this you have to find out, and power required to drive the system. So W you have to find out. Is it clear? Please check all the things. Now once we have written this, it is very easy. Now COP, what is COP? Q2 divided by W. So I can find W from this. It is Q2 divided by COP. What is Q2? It is given 1800 kilojoule per minute divided by 1.5. So it will be 1200 kilojoule per minute. Okay, this is what work input. Now what you have to find out, amount of heat rejected. So Q1 you have to find out. Now we know W is equal to Q1 minus Q2. So Q1 will be equal to W plus Q2. What is W? 1200. Just now we have calculated. What is Q2? 1800. So Q1 will be 3000 kilojoule per minute. Right? Is it correct? Now, so first answer is done. Now, power required to drive the refrigerating system. Power required, that means how much work we are providing, work input basically. So we have already calculated it, kilojoule per minute. So power required, how much it will be? 1200 kilojoule per minute. क्या मैं इसको 1200 divided by 60, what it will be, kilojoule per second. 1 minute means 60 seconds, so it will be 20 kilowatt. Right? Is it correct? 20 kilowatt. So how much power is required? It is 20 kilowatt. So what are your answers? So amount of heat rejected to the surrounding, it is how much? 3000 kilojoule per minute. And power required, how much it is? 20 kilowatt. Okay, आपको एक ध्यान में रखना है, देखिए किलो जूल पर सेकेंड दिया रहेगा या फिर किलो जूल दिया रहेगा, डोंट वरी. एक थंब रूल याद रखें, जब आप डिवीजन कर रहे हो तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका यूनिट सेम होना चाहिए. देखो, ओके, सो सीओपी इज Q2 अपॉन W. सो Q2 एंड W इसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ओके, जब आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हर एक इसमें यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. इतना याद को याद में रखना है. और पावर का यूनिट क्या है? वैट है या फिर किलोवाट है. सो आई एम एक्सप्रेसिंग पावर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, नथिंग एल्स. ओके, किलो जूल पर सेकंड कर लो तो आपको क्या मिलेगा? किलोवाट. अगर ये वैट में चाहिए तो आपको किलो जूल का अगेन जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. Okay, you can express power in either watt or kilowatt. So I hope the first example is simple and hope it is clear to everyone. Now let us discuss the second example. Now a refrigerator with COP 1.5 absorbs heat from food compartment at the rate of 360 kilojoule per minute. Draw the sketch again. So example is based on refrigerator. Refrigerator की block diagram draw कर लो. देखो एकदम सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें करना है नहीं. जो भी एग्जांपल दिया है, रेफ्रिजरेटर है, आर लिख दिया. अभी क्या क्या दिया है देखिए. रेफ्रिजरेटर है तो कुछ वर्क इनपुट लेगा. इट इज़ गोइंग टू रिमूव द हीट फ्रॉम द कंपार्टमेंट एंड इट इज़ गोइंग टू
reject the heat to the surrounding. So this is your surrounding at T1, this is your compartment at a temperature T2. अभी क्या गिवन है वो लिख लीजिए. COP दिया है, how much it is 1.5, absorbs the heat from food compartment at the rate of 360 kilojoule per minute. क्या दिया है? absorbs the heat from the compartment, this is your compartment, right? So कितना दिया है? 360 किलोजूल पर मिनट. क्या क्या फाइंड करना है? पावर कंज्यूम W फाइंड आउट करना है, एन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, दिस इज योर सराउंडिंग. ओके, या फिर आप लिख भी दीजिए, दिस इज योर कंपार्टमेंट, दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस इज योर सराउंडिंग. ओके, आई होप अभी क्लियर हो गया है, राइट? So very simple example. Let us try to solve this quickly. So COP, how COP we define? It is nothing but Q2 divided by W. W I can find out, Q2 divided by COP. What is Q2? Q2 is how much? It is 360 kilojoule per minute divided by 1.5. COP is 1.5. So 360 divided by 1.5. How much it is? 240. And what will be unit? Kilojoule per minute. ठीक है, Q2 का यूनिट क्या है? किलोजूल पर मिनट. सो W आप जो भी कैलकुलेट करोगे, W यूनिट विल रिमेन सेम. ओके, सो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अगर आपको किलोजूल पर सेकंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 240 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी किलोजूल पर सेकंड. कितना आएगा ये? 4 किलोजूल पर सेकंड. ऐसे भी कर सकते हो. ओके, राइट. तो आपको बेसिकली ऑप्शंस देख लेने पड़ेंगे कि यूनिट्स क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन कन्वर्ट नाउ. सो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड. ओके, पावर कंज्यूम हो गया. ओके, पावर कंज्यूम कितना आएगा? ये 4 किलोवाट आ जाएगा. ओके, सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, दैट मीन्स Q1 फाइंड आउट करना है. क्या रिलेशन हमें पता है? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. Q1 फाइंड आउट करना है, W प्लस Q2. कितना है W? यस, W इज 4, या फिर आप 240 ले लीजिए. यूनिट सेम लेने हैं. अगर W 240 लिया है, 240 क्या है? किलो जूल पर मिनट, और Q2 कितना है? 360 किलो जूल पर मिनट. ओके, इट इज फाइन. सो 240 प्लस 360 कितना आएगा? 600. 600 यूनिट क्या आएगा? किलो जूल पर मिनट. आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. 600 डिवाइडेड बाय 60 किलो जूल पर सेकेंड. कितना आएगा ये? 10. एंड किलो जूल पर सेकेंड इज व्हाट? किलोवाट. सो दिस इज योर आंसर. क्या आ गया आंसर? पावर कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर 10 किलोवाट. ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग 4 किलोवाट, या फिर 4 किलो जूल पर सेकेंड. नो इशू. Okay, so this is how the simple examples will be there. If your block diagram is clear, again I am saying focus on the block diagram, get it clear. Okay, so first 3 to 4 minutes of these videos, these are very important. If you are clear with the block diagram, you can solve any kind of examples. So I hope this example is clear. So hope you are finding these videos useful. If you are new to my YouTube channel, please do like and subscribe. That motivates me. And definitely I will try to bring more and more such type of useful videos for you, which will help you to score a good marks in your upcoming exams. So let us see example 3. Household refrigerator. Okay, आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, पहले रेफ्रिजरेटर ब्लॉक डायग्राम आप निकाल लो. ओके, नहीं भी बोला है एग्जाम में, अभी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा. ओके, लेट्स से योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, उसमें कुछ जरूरत नहीं है स्केच वगैरह निकालने की. ओके, बट इफ यू आर ड्राइंग दिस स्केच, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Q2 निकालेगा, Q1 क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा. दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज योर सराउंडिंग, दिस इज योर कंपार्टमेंट. पढ़ लो अभी क्या क्या रहे. हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर दिया है, COP दिया है, इट इज 1.8, रिमूव्स द हीट from the refrigerating space at the rate of 90 kilojoule per minute. Kilojoule per minute. It removes the heat from the compartment. Compartment बोल लीजिए, space बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हो. Okay, and this is your surrounding. Again, find the
इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, वर्क इनपुट निकालना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द किचन एयर सराउंडिंग। ओके। ओके, सो क्या दिया हुआ है अभी? ओके, सो हमें क्या दिया है? Q2 दिया है, क्या निकालना है हमें? W निकालना है। सो COP कैसे लिखते हैं हम? Q2 डिवाइडेड बाय W। सो फ्रॉम दिस what will be W? Q2 divided by COP. What is Q2? 90 divided by COP 1.8। कितना आएगा? 90 divided by 1.8। 90 divided by 1.8 it is 50। यूनिट क्या आएगा? किलो। यूनिट चेंज करिए मत, किलो जूल पर मिनट। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट? Q1। सो हमें W पता है, क्या रहता है? Q1 माइनस Q2। Q1 निकालना है, Q1 विल बी इक्वल टू W प्लस Q2। कितना है W? 50। ओके, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज Q2, इट इज 90। सो कितना आएगा ये? 50 प्लस 90, यस, कितना आएगा? 140। 140 अगेन यूनिट किलो जूल पर मिनट। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय द, अब पावर का यूनिट हमें पता है वैट और किलोवाट है। सो W हमने किस में निकाला है? 50। सो पावर रिक्वायर्ड और पावर कंज्यूम बोल लीजिए। पावर कंज्यूम हाउ मच इट इज? 50 किलो जूल पर मिनट। 50 डिवाइडेड बाय 60 किलो जूल पर सेकेंड। कितना आएगा? 5 divided by 6, so 0.83, 0.83 kilowatt। ओके, किलो जूल पर सेकेंड, किलोवाट। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर कितना आएगा? 0.8 किलोवाट। एंड हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द किचन एयर दैट इज Q1। कितना कैलकुलेट हुआ है? 140 किलो जूल पर मिनट। सेकेंड में करना है, डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, राइट? सो hope the examples on the refrigerators are clear. Again and again I am saying, if you remember the block diagram or sketch of whether it's a heat engine, refrigerator or heat pump, which we are going to study in the next video, the things will be very easy for you. So please do like and subscribe my YouTube channel and also hit the notification bell, so whenever I am uploading the next video you will get the notification of it. You can also join the Telegram channel. The link is given in the description box, or you can also like us on the Facebook page. You can find us on Facebook. You can just simply write tutoring cluster. Definitely you will be able to find us on the Facebook. And if you want the handwritten notes of systems in mechanical engineering, the links of the handwritten notes is also given in the description box, or if you have already joined the Telegram channel, I have already uploaded those notes, the link of those notes in my Telegram channel. So please do like and subscribe, it motivates us, and please don't forget to share this video with your friends so that they will also prepare well for your upcoming exams. Thank you.